Hello friends, welcome back to my channel and thank you for your support and your valuable comments. And in this video again, this is part 2 video of MCO04. And I hope you people have watched my part 1 videos and would have understood a lot of new concepts from there. Surely like all these videos are going to help you in your examination, and please watch these videos carefully till the end to have a complete understanding of the concept. So let's start with unit 13, and in the first video we had done up to unit 12, and let's see, there are 9 more units to go. So unit 13 is on structure of Indian economy. Okay, so let's see the first question. This question came in the exams: why India is an underdeveloped economy? Now बहुत ही एक्चुअली इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, हम लोग को मालूम भी है कि वाई आवर कंट्री इज अंडर डेवलप्ड और पुअर. It is due to low per capita income of the people. The second reason you can give, like lot of people directly or indirectly depends on agriculture. Then there is a rapid growth in the population for which there is a problem of unemployment due to rapid growth of population. All the points friends interconnected. Again there is lack of capital. लोगों के पास में पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. जो भी एजुकेटेड पीपल हैं बट स्टिल देन दे लैक द स्किल्स, talented and required expertise. So that is one problem of human capital. There is illiteracy and unskilled labor still there in India, and there is a lack of latest technology due to lack of capital. Now the second one, that is the difference between economic growth and development. I think ये concept भी मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरली इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, राइट. बेसिकली जीडीपी जब इंक्रीज करती है दैट मीन्स देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली दिस इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. And economic growth is just a part of economic development, and economic growth is the overall development of the quality of the life of the nation, which includes economic growth. That means in simple words we can say that economic development refers to economic growth plus reduction in poverty, unemployment, illiteracy, okay, मोर्टेलिटी रेट. सो लाइक दैट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका रिडक्शन होना चाहिए फॉर ए कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी. बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. एंड इनका basically the main of this sector is welfare of the people. ठीक है, मेनली इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता इनका, एंड फिर भी दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. द फर्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन, right. They help in capital formation. They give a lot of employment opportunities to the people of India. Then this one balanced development of different regions. क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं या रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड while the other are not so much developed. So for a balanced development you need public sector. Then upliftment in research and development. Okay, so constantly the government is trying to develop the technology, and उसके लिए बहुत सारे researchers होते रहते हैं, right. आगे चलते हैं. यूनिट 14, दिस इज ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग. ओके, लेट्स सी व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग and what are the main objectives of economic planning in India.
एज वी नो इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसे तो हर मंथ होती रहती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में है. दैट मीन्स 5 years plans. And way back in the year 1950 it started, right? And basically let's see its main objectives. इसके main objectives क्या थे? The first one is economic development of our country, right? Rise in GDP, reduction in poverty, reduction in unemployment, uh, and illiteracy, and increased levels of employment. That means more and more people can be provided with employment opportunities. So that was again another very important object of uh, economic planning. Then to achieve self sufficiency, मतलब इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, लाइक सो दैट कम से कम इंपोर्ट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो, राइट? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत वैरायटी के लोग यहाँ पे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. देन टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. Economic stability, that means economic conditions, they are very dynamic, चेंज होते रहते हैं, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी डिप्रेशन. तो इनको थोड़ा सा स्टेबल करना, राइट? एज वी नो दैट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ए कंट्री, बट रिसेशन पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड दे आर बेसिकली ड्रॉबैक्स. आगे चलते हैं. एंड this one, social welfare and provision of efficient social services. So this was again a very important objective कि लोगों का welfare, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का welfare हो and उनका development हो. Then regional development, just now I told you about this. Then the next one is comprehensive and sustainable development. Sustainable development जैसे कि आप लोग previous classes में पढ़े हुए हैं, that you have to save the resources for future use, for the generation to come. So you must conserve the resources right from here. So this is one of the, again, a very very important this thing objective. Then reduction in economic inequality, because हमारे society में basically तीन class के लोग हैं, that is upper class, middle class and lower class. तो generally the upper class, they are getting richer day by day, and basically middle class and lower class, these are the main hit back people. तो इनको जितना ज़्यादा हो सके सोशल इनइक्वालिटी को कम करना, रिड्यूस करना, राइट? ओके. देन सोशल जस्टिस, there should not be any discrimination on the basis of religion or race or caste or sex, like that. Then increased standard of living. Okay, so these are all the important objectives of our 5 years plans, right? Next unit 15, it is on economic policies. Let's see, very very important chapter. इस chapter को आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है, very important one. And let's see, 1956, right? एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1956 में, एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने के लिए बोलते हैं कभी कभी. तो देखते हैं मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. बेसिकली इंडस्ट्रीज वे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज शेड्यूल ए इंडस्ट्री, देन शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी. इन शेड्यूल ए वी हैड 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर हियर, एंड इन शेड्यूल बी we had 12 industries, and in schedule C all the other remaining industries. So basically the different types of industries were divided into 3 categories. Okay, and accordingly priority was given to more and more of schedule A industries, right, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का वेलफेयर हो. एंड लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, assistance to private sector. So this was again this private sector, जो private companies हैं उनको help करना, उनको develop करना. Then the next one is expanded role of cottage and small scale industries. So as we know that these type of industries are providing a lot of employment opportunities, and also they play a major role in the share of exports as far as India is concerned.
तो ये जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको और ग्रो करना, डेवलप करना. देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 1956 इंडस्ट्रियल प्लान was balanced industrial growth among the various regions. As I told you, like, you know, there are many regions in India, like, you know, northeastern states में बहुत सारे हैं, like अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. These states are, you know, not well developed. वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा नहीं है. तो यू नो बैलेंस्ड करना है ग्रोथ को, सो दैट यू नो ऑल द स्टेट्स ग्रो साइमल्टेनियसली. The next objective is the role of foreign capital, and more of foreign capital was, you know, encouraged. You know, foreign investment encourage किया गया इस plan में, and more incentives were given to the laborers so that they could be having a decent standard of living. Okay, आगे चलते हैं. Now this is one of the most important question. Explain the salient features of the new industrial policy 1991. I told you many times in my many videos that this year 1991 was a, you know, turning point as far as Indian economy is concerned. So there were a lot of changes introduced in this year, and this is one particular policy. इनफैक्ट MCO 04 में ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, आई थिंक ये तीन यूनिट्स में. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई डोंट थिंक कि आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है विदाउट दिस ईयर 1991. तो इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है. लेट्स सी द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी. द फर्स्ट वन, टू बिल्ड फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. Right, industrial development, more and more industries to be set up, that was decided. And then to correct the weaknesses of the industrial structure. जो भी weaknesses हैं, जो loopholes हैं, उनको correct करना, so that we can establish more and more industries, and that would definitely help in the growth and development of India. The fourth one, to grow industrial productivity and employment. So these are all related. Then to attain international competitiveness, that means to manufacture such goods which are of international standard, and our Indian product can easily compete with the foreign products. Okay, let's see the main features or characteristics of this policy. The first one is abolition of industrial licensing. Right, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहे हैं, बिकॉज 1991 में कुछ 17 इंडस्ट्रीज थे, देन इट वाज अगेन चेंज्ड एंड रिड्यूस्ड टू ओनली 6 इंडस्ट्रीज. एंड ये जो 6 इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर अल्कोहल, सिगरेट प्रोड्यूसिंग कंपनीज, देन हैजार्डियस केमिकल्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज. तो ये जो मेन 6 इंडस्ट्रीज हैं, आज भी अगर आपको ये सब प्रोडक्ट बनाने हैं तो यू हैव टू टेक ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. राइट, नेक्स्ट चलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. अगेन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, कि व्हाट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट. एंड यहाँ पे बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, disinvestment is converting the public sector enterprises into private sector enterprises. That means either by share or by management, you will transfer the public companies into private companies, so that they will be in profits and they can generate revenues. Okay, so this is disinvestment, a very important part of this policy. Then free entry to foreign investment and technology. ये 1956 में भी था that foreign investment was encouraged. Again in this policy it was again revised. More stress was given on foreign investment, foreign direct capital and foreign technology, so that we can also grow, we can also develop. Okay, the next very important one, liberalization. Liberalization means removing all the restrictions from our domestic companies. देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मतलब एक अलग ही चैप्टर है जो हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन दिस.
ओके, आगे चलते हैं। एंड यूनिट 16 इज ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम्स में, तो यू कैन ऑलरेडी you can weight this question कि what is the weight of this question. It's very very important one, so you should revise, you should learn, you should gather as much or as information as you can, because this is going to be a very very important one. ओके, सबसे पहले समझते हैं स्मॉल स्केल सेक्टर होते क्या हैं। ये कुछ मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल स्केल सेक्टर आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज with the help of relatively smaller machines and few workers. Investments is between 25 lakhs to 1 crore in manufacturing industries basically, and these are generally sole proprietorship or partnership, and these are managed by the owners themselves. That means they do not have any professional management. They operate at a local or regional level, and they are labor intensive industries. That means very few machines are used to manufacture products in small scale industries, और इवन कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इसी के अंदर ही आती हैं। देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू एनकरेज और टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ इसके अंदर सबसे पहला नाम है सिडको। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। SIDCO stands for small industrial development organization, and basically these are state owned institutions, and इनका main object है to promote small scale industries, to provide infrastructure facilities। ये कुछ key words हैं जो आपको याद रखने हैं SIDCO के बारे में। To develop skills, labor skills, that labor उनकी skills को और बढ़ाना through training institutes, and then to provide technical assistance to women entrepreneurs especially, so that they can also self starters, and then to provide export marketing assistance, so that they can export more and more of their products. The next one is small industries service institutes, that is SISI, and basically these are set up one in each state, okay, one per state, and basically there are 28 states हैं, तो 28 SISI branches यहाँ पे institutes हैं, and they are set up in the basically in the state capitals, and they provide training to small entrepreneurs. Again, the workers are trained for to learn new skills, to provide technical and managerial consultancy services to the entrepreneurs, and to conduct market services in the target areas. So these were the main important features of SISI. The next one is NSIC, that is National Small Industries Development Corporation, sorry. So National Small Industries Corporation, as the name implies, ये नेम को लेके आपको मतलब डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इट सप्लाइज मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, and they supply this on easy hire purchase terms, so that जो small scale entrepreneurs हैं वो easily afford कर सकते हैं, and they also provide marketing facilities in both domestic and international level. They supply raw materials at a very reasonable prices. They also provide loans, finance at reasonable rate of interest on easy terms, that means without any documentation. So like that there are few more, आपके बुक्स में तो बहुत सारे दिए हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, so this was established under the Special Act of Parliament in 1990, and its main object is to promote MSME, that is micro small and medium enterprises। ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है MSME लोन्स। बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी लोन लेती है यहाँ से, and they provide loans on this, like this they also provide marketing services, and basically their aim is self employment को grow करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को self employed करना,
and they also provide loan for modernization and buying new technology. एंड स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प मिलती है एमएसएमई लोन्स और मुद्रा लोन से, लाइक महिला उद्योग निधि एंड महिला विकास निधि। तो ये बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं SITBI की, जहाँ से स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स लोन ले सकते हैं एंड कैन एक्सपैंड दैट बिजनेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, क्या प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, ऐसे क्या स्कीम्स हैं जहाँ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती है। तो सबसे पहला तो है रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, एज मेनी एज 800 आइटम्स विच आर रिजर्व्ड स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड ये सब आइटम्स में केमिकल्स, लेदर, प्लास्टिक, पेपर, ऐसे अगरबत्ती बहुत सारे हैं। Then the next is reservation of items for exclusive purchasing from small scale sector. So as many as 409 items, जो most probably 400 लिखने से भी चलेगा, which are exclusively reserved for purchasing by the government. Government खुद purchase करती है so that वो sustain कर सके, right? And lot of incentives are given in the backward areas for their development. Let's see a few more of them. Then central excise duty is exempted, and then programs on environment and quality management, and there are some special economic zones जिसको हम लोग बोलते हैं सेज। ये काफ़ी टॉपिक्स यहाँ से IBO 01 से भी मैच करते हैं। तो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर जनरली इंडस्ट्रियल पार्क्स where the government gives a lot of infrastructure and सारी टाइप की फैसिलिटीज होती है to develop and grow small scale industries. Okay, now the next question is give arguments for and against promoting small scale business in India. तो इसके मेन एडवांटेजेस तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है, मैं भी बहुत बार इसको आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है, सब लोग जानते हैं। फर्स्टली दे हैव शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, दे लैक फाइनेंस, क्रेडिट, पैसे नहीं है उनके पास में। देन टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है। देन मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाते, जो प्रोडक्ट की अच्छी प्राइस नहीं ले पाते हैं। पावर की प्रॉब्लम है, टेक्निकल असिस्टेंस, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। द लेबर हु आर वर्किंग हियर आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट। एंड और एक बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ग्लोबलाइजेशन से, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन से फॉरेन कंपनीज आर कमिंग इन, सो उनसे compete करना इज अ वेरी daunting टास्क फॉर दिस इंडस्ट्रीज। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूनिट 17 एंड इट इज ऑन अगेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यहाँ पे मैंने 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्पेशली यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किए हैं। वन इज प्राइवेटाइजेशन, एंड व्हाई दिस प्राइवेटाइजेशन इज यूजफुल फॉर अस नाउ। This is privatization means transfer of ownership, management and control of the public sector enterprises to the private sector enterprises. That means they are selling a part of their equity share to private companies. Basically 51% का जो शेयर है या 49% वो प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं। एंड the main object is to provide strong momentum for the inflow of foreign direct investment, then improving the efficiency of public sector undertaking, right? And there are ways like हम लोग privatization गवर्नमेंट कैसे करती है। बेसिकली इसके 3-4 मेथड है। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। एंड secondly is by disinvestment. Just now I told you about this, that the public companies sells a part of their equity shares to the private individuals, and these are the main advantages, like efficient management, because private people ज़्यादा अच्छे से manage कर सकते हैं, they can earn more profits, because यहाँ पे जो business के objectives change हो जाते हैं privatization में। Then efficient use of resources
अच्छे से यूज़ करते हैं, वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज. It reduces bureaucracy and red tapeism, and it provides a lot of employment opportunities also. And basically, the employees are motivated to work hard. They will not make a time pass in the office, as in case of public sector enterprises. Okay. आगे चलते हैं. ग्लोबलाइजेशन. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस ऑल्सो एग्जाम्स में हर साल ही आता है. एंड ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. एंड बेसिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं. दैट इज़ फ्री ट्रेड अमंग द नेशंस to reduce the custom formalities and restrictions on international trade. Then liberalization means removing all the restrictions from the domestic companies, so that they can also enter into international arena. Then to increase employment. Okay, more and more people can be engaged in this. And the next feature is increased connectivity between the nations. लाइक उनके बीच में ब्रदरहुड एंड अच्छा कोऑपरेशन को इंक्रीज करना नेशंस के अंदर, एंड इंटरडिपेंडेंस को कम करना है. बट स्टिल देन अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली इट वांट्स द कंट्रीज टू डिपेंड ऑन ईच अदर. अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होगा ही नहीं इफ ऑल द कंट्रीज आर सेल्फ सफिशिएंट. देन इन ग्लोबलाइजेशन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस. It gives rise to urbanization. It increases the standard of living of the people, because the people can get international quality of goods and services. Then there is a reduction in production cost due to economies of scale and outsourcing. तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. And these were the economic reforms which were introduced in India in the year 1991. एंड दीज आर ऑल द इम्पैक्ट्स. सो इम्पैक्ट क्या हुआ, ये जो रिफॉर्म हुआ था 1991 में, इससे इंडिया पे क्या इसका असर क्या हुआ है? बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है. दैट मीन्स हाई ग्रोथ रेट इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देयर इज ए रिडक्शन इन पॉवर्टी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर द पीपल. देयर इज ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज. देयर इज ए राइज इन इन्फ्लेशन. Growth in infrastructure, foreign investment, it has also increased, and there is a reduction in regional disparities. So like this you can write the impact on this if you get a question. Unit 19 is on balance of payment and exim policy. Now let's see what are the measures taken by the government to promote exports. ये थोड़ा सा देख लेते हैं. This just now I told you about this, says that is the special economic zones or parks which are created in lot of states. तो यहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एंड बेसिकली द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू एक्सपोर्ट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स. सो ऐसे लोन फैसिलिटीज़ से लेके इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, देन ब्रांड प्रमोशन, exempting the custom duties and taxes, so like that. Okay, what is balance of payment, and इसके main components क्या है, and the difference हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. BOP and BOT, board of this is balance of trade and balance of payment. Basically balance of payment is a statement of a country's receipts and payments in foreign exchange. In other words, it is the difference between the exports and imports. If exports are more than imports, then there is a favorable balance of payment. Otherwise, negative balance of or unfavorable balance of payment. Now these are the items we generally consider in current account of BOP. Basically यहाँ पे balance of payment में दो account maintain करते हैं. One is current account, the other is capital account. करंट अकाउंट एज यू नो, यहाँ पे जो डेली की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. लाइक ऑल मटेरियल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू फॉरेन कंट्रीज, देन सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, डोनेशन एंड गिफ्ट्स, एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस. सो लाइक दिस, ऑल दीज आइटम्स को आपको ध्यान देना है व्हेन यू विल राइट अबाउट करंट अकाउंट.
कैपिटल अकाउंट में बेसिकली थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड, movement of banking capital. That means if you are receiving loan from foreign countries or you are giving loans to foreign country. Private foreign loan flow, that is loan from other so like this. तो ये सारे आइटम्स को हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं. Okay, so these are the different methods by which BOP is measured, like these are monetary policy, and or it is also known as deflation. And when prices falls, which makes export attractive and imports relatively costlier, so this eventually leads to rise in exports and fall in imports. Then we can have exchange depreciation. It means decline in the rate of exchange of one country in terms of the other. Then we have devaluation. This is again one measure to control unfavorable balance of payment. Some other methods are there, like exchange control. Then the RBI can take some fiscal measures, import duty or import quotas, the government can set this, and stimulating or improving the exports. That means encouraging the exporters to export more and more so that it can correct an unfavorable balance of payment. Then for foreign loans, as far as possible, the government should not take these loans, and encouragement to foreign investment, FDI. So these are few methods to correct balance of payments. These are the differences. Basically आपको just एक बार go through करना है इससे. Then this is on stage, special economic zones. We have discussed so many times, and basically it is a particular area in which the business and trade laws are different from the rest of the countries. The main object is to promote exports, and कुछ main features हैं, जैसे it provides world class facilities on electricity, road transport, warehouses, reduction of taxes, labor laws are more flexible here, duty free import है, import कर सकते हैं machineries without paying any duty. No license is required to import capital goods. So ऐसे बहुत सारी facilities provide करते हैं. Okay, आगे चलते हैं. Exim Bank, Export Import Bank of India, and what is the role that it plays in international trade for India. Basically, it was set up in 1982 to finance and promote foreign trade in India, and it is the most important bank which deals in international trade, and it provides finance through a variety of lending programs which includes funded and non-funded finance, and it provides financial support to export the Indian machineries, manufactured goods and services, technology like that, and it also gives advisory services to the exporters, and so like that आप इसको बहुत सारे रोल्स हैं इसके एक्सिम बैंक के जो आप हाईलाइट कर सकते हैं. Then comes FEMA. FEMA stands for Foreign Exchange Management Act, and this act was passed in 1999, and इसका मेन ऑब्जेक्ट देखते हैं. बेसिकली एज द नेम इम्प्लाइज फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, राइट. Rules and regulations set करना to convert the foreign exchanges, and this FEMA was previously known as FERA, okay, Foreign Exchange Regulation Act, which was changed to Foreign Exchange Management Act, and the main object is written here, that to increase the flow of foreign exchange in India without any legal barriers. So this was the main objective of FERA or FEMA, whatever it is, and based on this you can write a lot of things. Then to remove restrictions on the sale and purchase of current accounts item, and it gives powers to central government to regulate the flow of payments to and from India, and all these financial transactions concerning to foreign securities and exchange, so they cannot be carried out without the approval of FEMA.
So it plays a very important role. तो like this basically यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है एंड आगे चलते हैं ग्लोबलाइजेशन अगेन ग्लोबलाइजेशन एंड डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग बार बार कई बार पढ़ चुके हैं डब्ल्यूटीओ देख लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट वाज क्रिएटेड इन 1995 okay and the main focus was to provide open lines of communication among concerning trade among its members. So basically you know WTO is the successor of GATT is the general agreement on tariffs and trade which was created in 1947 and there are 164 member countries are there and which accounted for nearly about 98% of the world trade through WTO and like this इसके main जो objectives हैं to set and enforce the rules for international trade to provide a forum for negotiating and monitoring the trade liberalization to resolve trade disputes ये बहुत ही important function है WTO का and to increase the transparency in the decision making process of the member countries as far as only business is concerned and to help the developing countries again these are again the main functions like administering the trade agreements between any two countries acting as a forum for trade negotiations then settling the trade disputes and reviewing national trade policies then building trade capacities फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप करना उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना लोन प्रोवाइड करना एंड कोऑपरेटिंग विद इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सो लाइक दिस you can write a lot about this then we have a short note on GATT that is a general agreement on trade and tariff okay so this was started with 23 countries ये थोड़े से figures आपको याद रखने हैं in 1947 just after the second world war and the main purpose of this was to to encourage international trade and कुछ और इसके मेन प्रिंसिपल्स देख लेते हैं गट के ये 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन कोई भी कंट्री एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन एनी ग्राउंड देन प्रोविजन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस remove all the trade restrictions so that there can be free flow of goods and capital and human capital also then consultation if there are any disputes among the member countries regarding trade it can settle that एक और शॉर्ट नोट है ट्रिम्स पे दैट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में आता है एंड यहाँ पे जैसे कि इसके नाम में दिया हुआ है दैट ट्रिम्स बेसिकली इसके मेन ऑब्जेक्टिव से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा इट ओनली अप्लाइज टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स related to goods trade and this does not apply to service sector कुछ और इसके मेन फीचर्स हैं लाइक इट डजंट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट ये इसको रेगुलेट नहीं करता एंड इट इज़ अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड like that you can write a few lines about trims okay then देखते हैं again a short note on Indian Patents Act 1970 and patent basically it is an exclusive right granted to an invention which is a product or a process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem so based on this these patents are provided and to get a patent technical information about the inventions must be disclosed to the public and the patent office has its headquarter in Kolkata and there are a lot of branches here and then the controller the head of these departments the controller general supervises all the
दिस पैटेंट्स ऑफिसेस। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं पैटेंट राइट्स में 99, 2002 में, 5 में, 6 में। इसके मेन फीचर्स देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ है। दैट इज़ बेसिकली पैटेंट्स दिया जाता है ड्रग, फूड, केमिकल्स और एनी न्यू इन्वेंशंस। देन द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पैटेंट इज फॉर 20 years, ये आपको याद रखना है। एंड लाइक दिस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। These rights are given to persons over the creation of their minds. That means exclusive rights are given in form of copyrights, patents, trademarks, trade secrets, like that. And basically intellectual property rights are given for the following activities, like industrial designs, new scientific discoveries, literary, artistic and scientific works, inventions or discoveries in any field, and commercial names of the companies. So okay, now what are the advantages? Basically exclusive rights are enjoyed by the creator or inventors, and it encourages people to share their creations because चोरी होने के chances नहीं होते। ओके, यूनिट 20 में चलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस। नाउ व्हाई फॉरेन कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ FDI? बेसिकली FDI से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनडायरेक्टली प्रोवाइड हो सकता है। इट हेल्प्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। it develops the human capital. We can use latest technology, we can buy latest technology from foreign countries. It helps in in growth, because growth of exports, because domestic countries rise करेंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती हैं। एंड अगेन कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप होता है, बिकॉज इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही कंपनीज जब टकराती हैं मार्केट में, तो इट इज़ अ बूस्ट फॉर द कंज्यूमर्स। देन ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सो लाइक दिस, ये सारे पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशनल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी? ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी IPO 01 में भी था। एंड बेसिकली टेक्नोलॉजी मीन्स a way of producing goods and rendering services, and transfer of technology is the transfer of technical knowledge from one agency to the other, right? And in simple words, transfer of knowledge of production of a product is called transfer of technology. And basically these are governed by property rights. And यहाँ पे यहाँ पे जो जिस कंपनी के पास में टेक्नोलॉजी है, दैट कंपनी एंजॉयज प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द टेक्नोलॉजी फॉर बेसिकली 20 years, and it can sell this to the developing countries on some conditions. And जनरली ऑल दिस बायर्स, जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से, तो उनको क्या फ़ायदा होता है, व्हाट आर द मेरिट्स? तो इसमें एक तो ये होता है कि इनोवेटिव न्यू टेक, इन्वेंटिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज कॉस्टलियर देन बाइंग ए टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द मार्केट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो आप खरीद रहे हैं मार्केट से, तो ऑलवेज कॉस्टली होती है। देन since successful technology has already been proved utility, so it finds more attractive क्योंकि successful technology है, and we can use the most modern technology, right?